Morning, children. A very warm welcome to your science online classes. In today's video, we are going to study with the next part of this chapter, that is part 2. We'll proceed with today's video and we'll start with solar system. Our solar system consists of the sun, 8 planets, moons, and other celestial bodies. The sun is at the center of our solar system. The planets, moons, and other celestial objects move around the sun in a fixed elliptical path called the orbit. Now see, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अपने सोलर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में. I have told you that in our solar system there are 8 planets and और उस 8 planets के बीच में है एक sun. ठीक है? So it is at the center and all the planets, the moons and whatever celestial bodies are present in the solar system, they move in a fixed path that is known as orbit. The sun's gravity pulls the planets towards its center. Therefore, the planets keep moving in their orbits. अब देखो ये हर planet का orbit है. This circle में आपको ये जो path दिख रहा है, this is the orbit of every planet. राइट अब जैसे अर्थ का कौन सा है, थर्ड वन, दिस इज इट्स ऑर्बिट. ये इसका ऑर्बिट है जिसमें वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, घूमता है इन अ फिक्स्ड पाथ, अपने ऑर्बिट में ही घूमता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज सन. द सन इज एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. सन इज अ स्टार. सन क्या है, एक स्टार है जो कि चमकता है ना. सिंस इट इज क्लोजर टू द अर्थ देन अदर स्टार्स इट लुक्स बिगर. The sun is a huge ball of fire. Sun क्या एक बहुत बड़ी बॉल की तरह है जिसमें फायर है. It is a huge ball of fire. At its center, hydrogen gas changes into another gas called helium, releasing a lot of energy as heat and light. जो हमें हीट और लाइट मिलती है सन से, वो कौन सी गैस है, हीलियम गैस के थ्रू मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट इज planets. A planet is different from a star. It does not have its own light. It revolves around a star and reflects the star's light. अब planets क्या हैं? Planets क्या हैं? They are not star. ठीक है, ना ही उनकी खुद की लाइट होती है. वो किसकी वजह से रिफ्लेक्ट करते हैं, किसकी वजह से चमकते हैं? बिकॉज ऑफ अ स्टार. ठीक है. There are 8 planets in our solar system. The planets in the order of their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these are 8 planets which are present in our solar system and they are in the line, or you can say from the in the order of the distance from the sun. Right? Now there is a table which is given in your book on page number 110 and 111 respectively. It's given about the planets and about their features with the picture. ठीक है. The first one is Mercury. आप देखिए पहले heading, planet, moons, features and picture is given to you in this table. The first one है Mercury, जिसमें moons कितने हैं, 0 moons. Mercury पे एक भी moon नहीं है. What is its feature? It is the smallest planet, you can say same size as of the moon, and day is very hot and nights are too cold at Mercury. Mercury में एक भी moon नहीं है, सबसे छोटा planet है, you can say as the size of moon. और इसमें क्या होता है, डे बहुत गर्म होते हैं और नाइट्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. ठीक है. The next one is Venus. Venus is the hottest planet. Venus is the hottest planet, almost the same size as of the Earth, and it is closest to the Earth. If you are asked which is the closest planet to the Earth, what you'll say? Venus. So Venus is the closest planet to the Earth. Called morning star or evening star as it is seen at dawn or dusk. Dawn or dusk क्या होता है, सुबह शाम. तो आप वीनस को मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हैं, इवनिंग स्टार भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज सीन एट डॉन और डस्क. रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट अनलाइक अदर प्लैनेट्स. ये कहाँ कैसे रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट में रोटेट करता है.
बाकी सारे प्लैनेट्स ईस्ट टू वेस्ट रोटेट नहीं करते, बट वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड इट इज जस्ट एज द साइज ऑफ द अर्थ एंड इट्स वेरी क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ. द नेक्स्ट इज अबाउट अर्थ. अर्थ पे कितने मून हैं? 1. हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? वी लिव ऑन अर्थ. सो अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट as 2/3 of its surface is covered with water. This is the picture of Earth. अब ये Earth है, इसका जो 2/3 part है, see this is suppose 3 parts of Earth. तो इसका जो ये 2/3 part है, this 2/3 part of Earth is covered with water. It is the only planet known to have life. Earth पे ही life possible है. Only planet to have life. Has mild climate. Water is present in all the 3 states. Earth ही एक ऐसा planet है जिसपे water present है in all the 3 states. That is solid, liquid and gas. Right? The next is Mars. Mars has 2 moons. Earth-like planet in the solar system, half the size of the Earth. अगर Earth इतना बड़ा है तो इसका Earth का half के साइज का प्लैनेट है मार्स. हैज 4 सीजन्स एंड आइस एट पोल्स. ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट एज इट्स सॉइल एंड रॉक्स आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन. मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज इट हैज सॉइल एंड रॉक्स. इट हैज रेड. why these soils and rocks are red? Because of the presence of iron. This is known as red planet. Only planet besides Earth where life may exist. अर्थ के अलावा एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट पॉसिबल हो सकती है. इट्स नॉट येट डिस्कवर्ड और प्रूव्ड कि लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है, बट अपार्ट फ्रॉम अर्थ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ कैन बी पॉसिबल. इट कुड बी पॉसिबल और इट मे एग्जिस्ट. साइंटिस्ट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं अबाउट दिस कि whether there is life or not, whether it could be possible or not, but they're still discovering and it could be in future कि life may exist on Mars, the only planet besides Earth. Right? The next is Jupiter. Jupiter has more than 16 moons. It is the largest and gaseous planet, more than twice as massive as all other planets put together. Fastest spinning planet. This is the fastest spinning planet among all the other planets. The next is Saturn. Saturn has more than 18 moons. It is the second largest planet after Jupiter, which is also a gaseous planet. Has many rings made up of ice, rocks and dust. You can see here in the picture Saturn के चारों तरफ rings हैं जो कि किससे बनी हुई हैं? Ice से, rocks से और dust particles से. And this is the second largest planet after Jupiter, and it is also known as a gaseous planet. Next is Uranus. Uranus is covered with a layer of blue-green gas called methane. Uranus किससे covered है? With a gas which is known as methane, and it is blue-green planet. It is huge and icy planet. Icy planet means the planet which is covered with ice, and it's very huge. And it has 27 moons present on its surface. The next is Neptune. Neptune has 8 moons present on its surface. It's very giant and icy planet with strong winds. This is also in blue color due to the presence of methane gas. अब यूरेनस पे भी मीथेन गैस का प्रेजेंस है और नेपट्यून पर भी मीथेन गैस प्रेजेंट है, and they are blue in color because of this gas only, that is methane. It has 8 moons present on its surface. So this is about all the 8 planets we have studied with the number of moons on these planets and their features. Watch this video carefully and I'll give you the work related to this table which is to be done in the science notebook very neatly. That is all for today's video. Thank you and have a nice day.